So this is the question number 19 from CBSE midterm paper 2021, and this question comes under the topic class 11th Python revision. So in this particular question आपको एक Python की statement given है और आपसे पूछा गया है कि what will be the correct output of this particular expression. Okay, so in order to answer this one, you need to be aware regarding the precedence and associativity of operators in Python. So I want you to take a look at this table. चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें इस टाइप के तो आपके पास डाटा हैंडी रहे कि कौन सी ऑपरेटर पहले रिजॉल्व होगा. सो नाउ कमिंग बैक टू अवर क्वेश्चन. तो बेस्ड ऑन द प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसकी है? प्रायोरिटी यानी किसकी है? इसकी. दिस इज योर एक्सपोनेंट ऑपरेटर. तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? इसकी. यानी कि इस एक्सप्रेशन के अंदर सबसे पहले कौन सा रिजॉल्व होगा? 3 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 9. ओके, 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2. नाउ इन बिटवीन प्लस एंड डिवीजन, डिवीजन की प्रेसिडेंस ज्यादा है सो दैट्स व्हाई आपका डिवीजन विल बी रिजॉल्व फर्स्ट. तो वैल्यू नाउ 5 प्लस 9 by 2 will become 4.5. Now we have only one operator left, which is now answer would be 9.5. So the answer for this one will be option number C, 9.5. Now based on this one, answer this practice question in the comment box कि इस particular expression का क्या output आएगा. Okay guys, that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay then, thanks for your time.